have a this is the revision part. So you have already this class is already done in the normal counseling session. This is just a revision one, and whatever you have a queries, we can discuss on that platform, right? So welcome, student, and it is my privilege to be here along with you. Now, question is, the department assigned me the academic library system. An academic library system, you know better than me because you have already in academic session, academic process. So you always visited many university, college library, even in your school library also. So there are things in the academic library. Now, before going to the academic library, we need to have some ideas behind that. How academic library evolved and what is the historical perspective and how it is came, what is the Indian knowledge system, and what is our area of interest in science and technology, how things has developed. These are the important aspects, right? So let's start my screen. And let's start my screen. I must share my screen. Can you see my screen, please? Yes, sir. It is visible. That's good. Hopefully, I think you have seen this screen, no? So these are the important aspects. You have in Unit 1 academic libraries and their development. And lesson 1 is objective and function of the academic library. These are the important topic here. The learning objective, introduction, academic library, historical perspective, collection development, collection of academic library, objectives of the academic library, purpose of the academic library, school library, college, university library, major functions of the academic library, integration of library education. Then you have a summaries as usual, glossaries, and question answer, self-assessment question, reference and suggestions. Now, question is, before going to the academic library, tell me what are the major library system within the library, which will come first? Is the public library will come first when you divided the library system? What will come first? It's the public library, academic, or special library, or the academic library, public library, and special library? Which one will be come first? Can you tell me, anybody? अब बता सकते हैं कौन से आएंगे पहले, एकेडमिक लाइब्रेरी आएंगे या पब्लिक लाइब्रेरी आएंगे, और क्यों आएंगे? Anybody? So public library. क्यों आएंगे? Because it covers all ranges of students, research scholars, public, and so it's comprises all the beginning from adult students to the older students. Very correct. Its umbrella is bigger than the academic library, right? Yes. Academic library का मतलब होता है जो academic institutions में जो libraries होते हैं वो library, but public libraries की domain बढ़ जाता है. So उनकी coverage it is not restricted to the academic people. It is the people which beyond academic they also cover. So continuing education and other special education people can add on that. That's why the public library, because the literary warrant of the public library is much higher than the academic library. That's why the public library will come first, then the academic library, then special library. Now, can you see behind the screen which picture I have uploaded over here? Anybody? What is the picture? Takshila University. It's a Takshila University. Yes, it's very true. Now, where it was earlier, it was in India, no? And right now, where it is? Pakistan. Near to Rawalpindi.
right, near to Rawalpindi. This is Takshila University, in which time period that university was there. It is almost 600 BC, right? 600 BC. Now look at that. This is this structure is a demolished structure of the Takshila University. And here you can see the screen behind that particular screen. It is a majorly complete structure of the Takshila University. It is a huge university, and many people used to study over there. And that was probably, some people says that Alexander Library is the university library, is the first university library, but they have not discovered well. That's why they never talk about the Takshila University. Takshila University is one of the most ancient university library, university system. And the library which was possessed over there, it is basically the most ancient academic library in the world. Now, can you think India in 600 BC that we have an academic library, and that particular library is specialized with the different department? Earlier, I have already told you that there was an incident where the son of Ashoka, Kunal, we have a Kunal also in our team, in our group. Now, he got some eyes. He got some problem in his eyes, and he rushed over there. The eyes were treated over there. They have an ophthalmology department. Now, can you think that time there is a ophthalmology department was there, and the majority of the books on that subject area was on that particular library. People came from outside, destroyed it, burnt it. So the ancient knowledge, the people of us who have created that particular knowledge, our generations, Purvaj. So the whole knowledge has destroyed, right? Keeping this idea into the public academic library, we have a three major. Here it is public library should come first, then academic, then special library. Now, what is the basic difference between the public, academic, and special library? Can you tell anybody? Here's the basic difference. Is that the book or the library or the clientele? Users. The users. Clientele. Clientele, right. So the major Yes, users. Yes, the major focus is on the basis of the clientele, because we have a different clientele in different libraries. Special library people, suppose a person doing research in ISRO, he or she may not be require the many books. She or he may require the specific books, specific information system. So that's why we have a special library there. So even ISRO has huge number of e-resource collection, new journal collections. So they have they have a selective dissemination of information system. They have a current awareness services. So these are the important aspects in the special library, where that may not be applicable to the public library, is sometimes in academic library too. Because if we talk about the school library, if we talk about the even college library, hardly we require that kind of specialized services. Now, coming to the overview of the academic libraries, we have to look at the historical perspective of the academic library. We'll start from zero. Now, if we visit, we need to understand how library created, basically, because when society got knowledge, you have a societal knowledge. And that particular knowledge enhanced the capacity of the society. And what happened when society developed, they try to create a knowledge center for that. So how the Indian system of knowledge was there, we need to revisit before talking about the academic library. Now, if you visit that particular temple, in December, I have visited that Somnath. Have you heard about Somnath temple? Yes, sir. Yes.
Right. Yes. Yes, sir. If you visit Somnath temple, there this statue is there. I have visited in the month of January probably, and I've seen this one. There it is written, "A Samudra Dakshin Dhruv Payat Abadhit Yatirmak," means आप यहाँ से एक लाइट अगर देते हो, लाइट, स्ट्रेट लाइट, तो बिल्कुल साउथ पोल में जाके बीच में कोई आइलैंड नहीं है, कोई भूमि नहीं है, राइट? ये मैं 15th सेंचुरी की बात कर रहा हूं। एंड इन 15th सेंचुरी देयर वाज नो गूगल मैप, देयर वाज नो सैटेलाइट सिस्टम. It was created by our one monk or something, our one of the wisest person who created that. And actually they are our ancestor, right? So here you can see, if you create a direct light marks from that point to the South Pole, you will find there is no island at all. So can you imagine a person with his own thought process, ideology, had understood that there is a far away from that point, and there is no island. It is created by one Indian saint, or maybe. If we talk about the majority time, we talk 108, 108. Everywhere you will find in our Vedas that 108, 108 bar kar lo, 108 bar kar lo. 108 bar means why this is. Because it has its inherent meanings. Now look at that. If we put 108 sun from earth to sun, or moon to earth, if we put 108 moon, it's the distance is the same. Distance is the same, right? So your society, our ancestor, was created knowledge when there was no satellite system. There was no calculation process, and created that kind of magic. Theory of gravitation has created. Siddhant Shiromani, Bhaskaracharya, mentioned about the force of attraction resembling gravity, discovered certain later by the Newton, right? So this is, now P. Johnston has wisely said, gravitation was known to the Indians before the birth of Newton. There's a one scientist in the Western world, he talked about that. The system of blood circulation was discovered by them centuries before Harvey was heard of. So that's my ancestor, to the people of India. We are the generation of those enlightened personality. Mathematics, pi, is created Buddhayana in 5th century AD. Pythagoras theorem, numerals, Panini was there. He has created a lot of ideas on that. He put numerical instead of alphabet, 0, Brahmagupta. Albert Einstein is told that we owe a lot to the Indian who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made. That's the idea of Albert Einstein. Sometimes people say Aryabhatta, Brahmagupta, but could be anybody, but both of them was an enlightened person, and they were my generation. I'm the generation of those enlightened personality. We have the best university system in 700 BC, Takshila. There was a 10,500 students from all over the world studied more than 60 subjects. University of Nalanda, built in 4th century BC. Chinese Yansang, Fahian also studied in Nalanda. You have a medical surgery system. You have a yoga, which is still alive. People are practicing day by day. You have a medicinal system. You have a strong Ayurveda system. We have a strong astronomical scientist who has talked about the many things which today is proving that that's the best theory on that. We have our own calendar, and the exact solar eclipse, lunar eclipse, everything is counted. Every day is counted. Every beat of duration
of a period is counted, and it's how it is connected with a different planet. It is also counted. That is our calendar system. We have a based game, chess, Ludo, ladder than Ludo. This is our invention. People say so that Julius Robert Oppenheimer, the father of atomic bomb, was the atomic test Alam Garda, the first nuclear blast. He said, yes, in modern times, Mahabharata tells about the effect of Brahmastra and the description of matches, the result of atomic blast. He talked about that on account. So these are the Indian knowledge system. Now, what happened in ancient period? People used to we talk Vedas as a Shruti. So people used to say, the teacher used to tell, student used to remember all this thing. That's why it has came right that way, and people keeping everything in their memories. Now we cannot even remember one single telephone number in our memories. But previously what happened? People used to carry all the Vedas. They memorize it. Now, interestingly, I will tell you. You have whatever Indian mythological scripture, every mantras was created, we mention their name. Take an example. Hanuman Chalisa is created by who is created? Can you tell me? तुलसीदास sir. Correct. So at the last of the time, जब हम खत्म करते हैं, तब last में हम तुलसीदास सदाहरि चेरा कहते हैं. That means we referring that person every time that he has written this one. So our culture, हमारा culture ही है कि हम दूसरे की जब चीज लेते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं. कोई चीज, कोई भी चीज, कोई भी मंत्रास देखिए. ये अगला स्तोत्रम है, मार्कंडाय उवाच. Markandeya ji ne, he talked about that. The Rishi has created this one. Take Ganesh mantra, Narad uvacha. Narad has recited this one. He created that one. So we are taking the name of the person who has created a mantras for a particular god. Aparajita Sutra. You mention all those time. Markandeya uvacha. Again, the Adastrotam, Shiva Vacha or Brahma Vacha, something like that, we mention all this time. Durgastatam Shiva Vacha. So what I'm trying to tell is Siddhi Kunjika Sutram against Shiva Vacha. So we have a tradition. Even Shiv Rudrakstam, this is Tulsidas, he has created this one. What I'm trying to say is, your generation has a strong perseverance of knowledge, and they created a knowledge system in India. We carry forward that knowledge system, and that particular knowledge system, whenever we are using till date in our spiritual life, we referring everybody's name. That's my ethos. But what happened with us? Alexander came from Europe, Greece, in 336 BCE. Arab invention was there, 636. Turkish, Mamluks, Khiljis, Tughlaqs, Saidis, Bahamanis, the Mughals, the Portuguese, the British India up to 1947. People came from the outside. Your traditional knowledge, your own knowledge, they destructed, they degraded us, they demoralized us, they deformated our own knowledge system, which is missing. That there are many scripture is nowhere. We cannot even trace it out. Some of the temples as kept secretly. That's why it is coming to in our hand. Otherwise, it could have gone somewhere else. So that's the tragedy. Our own knowledge system
There are many things, many things has gone out. And that has came because we Indian academically very strong, sound. That's why we talk about the academic library. Now, interestingly, I will tell you. So I say normally, it's a knowledge eclipse. Knowledge eclipse. ग्रहण लग चुका था. बाहर से लोग आके जब आपकी नॉलेज को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपकी जो थॉट प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, एक्चुअली स्क्रिप्चर. सब तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी. नालंदा यूनिवर्सिटी में 3 लाइब्रेरी है. एक एकेडमिक लाइब्रेरी सिस्टम, और उस एकेडमिक लाइब्रेरी सिस्टम में जब आग लगाई गई तो वो 6 महीने तक वो आग जलती रही. और आपके जितने पुराने बुक्स हैं, जितने स्क्रिप्चर लोगों ने हमारे पूर्वजों ने लिखा, वो सारे चीज म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट कर लो, somebody is talking. So वो नॉलेज सिस्टम, सारे नॉलेज सिस्टम जीरो हो गया. कहने की तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति तक्षशिला यूनिवर्सिटी में कुणाल की आईज ट्रीटमेंट किए थे, उन्होंने कुछ ना कुछ लिखे थे. वो किताब उस लाइब्रेरी में, एकेडमिक उस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में था. नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, वहां पे भी लोग रिसर्च करते थे. उनकी जो रिसर्च थे वो उस लाइब्रेरी में थे. रिसर्च प्रोजेक्ट जैसे आप लोग करते हो. जब भी बाहर से लोग आते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो आपकी जो पुरानी नॉलेज है वो खत्म हो जाते हैं. और पुराने नॉलेज खत्म होने के मतलब है आपको दोबारा फिर जीरो से स्टार्ट करना होता है. सो ये एक इंडियन सिस्टम में हमारे साथ कैसे, वी नेवर गॉन टू एनीवेयर टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग. वी हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय अदर्स. दैट्स द ट्रेजेडी ऑफ इंडियन सिस्टम. नाउ I'm trying to, why I'm telling all those important aspects, because I wanted to make you understand what is the significance of the academic library into the society. That's the biggest importance of the academic library in the society. So if you have an academic library, if we have a best Delhi University library system, we're the best in the world. So that's why library is the face of an academic system, academic arena, academic institutions, right? Now, how it has, I have already talked about many in the evaluation of the library from the ancient period till independent era. Now, if we look at the Nalanda University 4th century, then Vikramashila University 8th century, then Jagadal Bihara 10th to 11th century, Navadip, then Sompuri University, 11th century, the Navadip is 10th to 11th century, Nagarjuna University. So 12 up to 1200 AD, you can see the different library system in Indian perspective. Ancient period, I have already told you that Shruti and Smriti, talk and remember. So when you talk, when people talk, and if you could remember for a long time a period, the capacity of the brain is significantly upgraded. Normally, it's so you can remember more of the things. So that's the work of the important aspect of the human brain is to take, analyze, and retain and act accordingly. The best part. So that's why Shruti and Smriti was one of the finest tools for our mnemonics power, to improve our mnemonics power. Nalanda University, I talked about the Hien Sang, and there is another person, Fa Hien, also visited over there. And it has its Ratna Sagar, Ratna Rajoka, and Ratno Dadi, the 3 important collection of the gem, sea of gem, ocean of gems. 3 library was there. It's a huge library. 9-story building was there. Bakhtiyar Khilji was got fire on that, and he destroyed basically. This was the Nalanda University, right? Then Vikramashila University, also there. Rich text on Sanskriti,
Prakrit and Tibetan language. That is Vikramshila University also there. This is again devastated by the Vakhtiyar Khilji. So these are the written. This is the Vikramashila University. It was a huge university. It is the sum of the portion is retained till date, but it is a huge university. It was a huge university. Jagaddal Vihar. The King Rampala portraying Jagaddal Vihar. That is also 10th century. It has some something. Then Sompur University. Then you have a Navadvip, the easternmost center of learning, Navadvip in West Bengal, which flourished during 10th and 11th century. It was crowned by the Goda ruler, who made it his capital, demolished by the Vakhtiyar Khilji. The person, now you see the contribution of Vakhtiyar Khilji has repeatedly demolished many of the important resource center of Indian origin. Nagarjuna University. It is also there. So if you see the evolution of the libraries in medieval period from 1280 to 1757, it is almost like that. Saraswati Mahal Library, then private Muhammad of Ghazni, his private library, Muhammad Gawan, his private library, Royal Library of Mughals, then Old Fort Library, Babur, and then Imperial Library, Humayun. So these are the important library. Somehow those people has kept their library in the name of Royal Library, private library. It was restricted for the people, but at least some books were there. In medieval period, there was a library, and it came like that way when that temple normally temple are when people thought that knowledge need to be spread. I will tell you one important story for that. ईरान में उनका नाम है सलमान सेकेंड प्रोबेबली, और वहां पे पहले क्या होता था, गुटेनबर्ग में जब आपकी प्रिंटिंग प्रेस तैयार हुआ और बुक्स प्रिंट होने लगे, तो पूरे यूरोप में सपोज आप एक अच्छी कोई लेख लिख रहे हो, वो स्प्रेड ओवर होते थे। स्प्रेड ओवर होने के मतलब बाकी लोग भी उस आइडिया से अवगत होते थे, मतलब दे स्टार्टेड लर्निंग दैट आइडियाज। तो नॉलेज स्प्रेड होता था, तो सोसाइटी डेवलप करता था। नॉलेज के बिना सोसाइटी कभी डेवलप नहीं करेंगे। सो वहां पे ईरान ने उन्होंने कहा कि ये सल्तनत ऑटमन प्रोबेबली सेकेंड, उन्होंने कहा था कि यहाँ बुक प्रिंट नहीं होगा, और उनकी क्राइसिस ऐसा हुआ कि वो एक समय में बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल जगह थे, वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगे। सो इम्पॉर्टेंट इज नॉलेज सोसाइटी, और informed society nahi, knowledge based society. Well informed society is something different, but knowledge based society is always have access to any given country, any given continent. So that's why the public library came into the existence. So everybody need to read. Saraswati Mahal Library was there. Then Muhammad Ghazni was 30. The story is the same. Somebody came and somebody destroyed. Then Imperial Library was there. Aurangzeb has the Imperial Library. Then evolution of the libraries in independent era, 1757. You have a Royal Asiatic Society Bengal, Asiatic Society of Bombay General Library, then General Public Library of Indore, Kanemira Public Library, then State Central Library of Hyderabad. These are the important library which helps a lot. National Library of Kolkata. It has now let me tell you one important data. Agar we have a national library. हमारा national library कोलकाता में है, और आपकी Library of Congress है यूएस। क्या नेटवर्क दिक्कत आ रही है? ये कौन बोल रहा है? वाईफाई म्यूट कर लो भाई, म्यूट तो कर लो।
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सारे रैक को एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम अगर लगाते जाए तो 526 माइल। सपोज आप सब लोग अभी दिल्ली में बैठे हुए हो, तो करीब करीब ये मान के चले कि यहां से बनारस तक चली जाएगी। और हमारा नेशनल लाइब्रेरी इंडिया की जो बुक रैक है वो अगर एक के बाद एक हम लगाते जाए वो 31 माइल्स है। तो मान के चलो अगर मैं जहां बैठा हूं, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से देख ले, तो आपका वो रैक्स एक के बाद एक उनका फार अवे होंगे टर्मिनल 3, राइट। इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 तक चली जाएगी। बट हमारा रिसोर्स उससे ज्यादा था, हमारा रिसोर्स डिस्ट्रॉय किया गया है। So that's why the things is that the Rampura Raja Library was there, Fuda Bucks Oriental Public Library was there. So these are the library came as a public library later on when things are different. Academic library during 19th century में बहुत सारे social, political, industrial and other pieces of life India's era transforming historical library in over the country. Bombay, Calcutta, Madras has come up with the enlightened library system. People used to read there. During independence, some of the academic library initiated the independent era, also development of academic 19th century, the Fort William College, Joy Kisan Mukherjee donated rupees 5,000 to the University of purchasing books for the library. And you have a Calcutta University Library also there. Then you have a first oldest university library established in British India. It's 1937, Calcutta University Library. That qualified librarian Nihar Ranjan Roy, he is one of the finest librarian in the history of India. People forget about that person, but he has a great contribution on that. He was a professionally qualified librarian, Nihar Ranjan Roy. He, for the first time in India, introduced the DDC and ACRT. He went there and learned things and came back and started using this one, 1937. But 1933, Ranganathan was proactively engaged in the dynamic theory of library classification, and he has come out with the idea of column classification, then classified catalog code. That introduced a lot, but he started initiate how we are going to manage the library. Then you have a Madras library was adopted in 1907. Then the government of India gives special grant to 1 lakh to that library. In 1924, S.R. Ranganathan joined Madras University Library as a librarian. He was the first professional qualified university librarian, which is missed over there in Indian history. Then Bombay University Library has established very late due to the lack of donation. It was University Authority Bombay that offered donation of 20,000 for construction of the library building. Now 20,000 is a big amount that time. In 1939, the central government provided special grant to the 50,000 to the University of Bombay Library and strengthened its collection. So one, that local authority giving 20,000 rupees for infrastructure, and the central government has given 50,000 rupees for collection development, right? So two important aspects in the library is one is infrastructure, second is collection development, and third one is another important aspect is how we are going to put all collection as a service to the different library service to our user. So 3 pillars of your library system. Punjab University Library also established in 1982. And the year 1900, Punjab University was open. Asa Don Dickinson started systematic training program in the Punjab University in Lahore. Now it is in Lahore. This is the first university course in undivided India. He's prepared the manual library called the Punjab Library Premier. He was the first written a book on library science. It's a handbook how to handle a library, academic library, administration of the academic library, you could say. Banaras Hindu University, also one of established in 1916, 1926-27, construction of the library was made by the huge donation of 2 lakh rupees by the Shivaji Rao. And he has given up tremendous places, infrastructure, everything. Is so one of the finest library.
Then after independent, there are many recommendations came, model commission, they told about the school library, how we're going to, because initially this university library was proactively worked on that. Then it has came the school library. So school library was scattered. There was no pre-planned way. There is no standard. That's why that committee was set up to setting up how we are going to give the information to the school and what will be the library, what will be the standard, how things will move. So that's why they have given what will be the ratio of the different collection, what is the textbook and general books. For that commission was recommended on that. These are the important aspects. Now, do you have any question on that area? Sir, madam, कलेक्शन बाद में आते हैं आप लोग हैं ना Sir, no question, but like you have just drastically changed the aspect. Like I was wondering why sir is teaching actually history, but it's like the foundation. We just need to know why we need to develop academic library or the public library. Why we have to maintain the collection. So like before it was destroyed and how it is correlated interlinked. So that's really changed the dimension. So yes actually that was really fascinating. Thank you. Actually, we need to know the history. Why we're doing this? Why we're studying this particular subject, right? What is the need of that subject? If you go to the one point, you will understand these are that's why we're more focused into that particular subject, right? Particular chapters. So that's you need to relate because it has its bigger umbrella. Library science, library profession is one of the finest profession, I always say, why? From सुबह से शाम तक, बड़े हिंदी में बताओ, सुबह से शाम तक आप लाइब्रेरी में होते हो तो आपके पास जो भी व्यक्ति आते हैं वो पढ़ लिखे लोग आते हैं जिनकी ज्ञान की जरूरत होता है. दे आर ज्ञान पिपासु कहते हैं, द थ्रस्ट ऑफ नॉलेज, राइट? दूसरा व्यक्ति नहीं आएंगे. So you are always bond with the knowledgeable people. That's the biggest plus point of this profession. That's why this profession has a greater value than any other profession. And you are always, you will, मतलब आप हर वक्त एक knowledge system के साथ जुड़े होते हैं, knowledge के साथ. Books का जो बड़े वो है, जब भी मैं लाइब्रेरी से मूव करता हूँ, लाइब्रेरी देखता हूँ, तो मुझे उस बुक्स जितने लोग लिखे हैं, वो किताब आप लोग देखोगे कि वो बुक्स रैक में रखी हुई है, बड़े शांत, साइलेंट. उनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है. कोई भी व्यक्ति अगर प्रोएक्टिवली कोई किताब उठाते हैं और वो पढ़ना शुरू करते हैं, फिर उनके एक्चुअल एक्शन स्टार्ट होता है, उनकी माइंड इग्नाइट करते हैं. तो बुक्स की वैल्यू और लाइब्रेरी की वैल्यू तो रहेगा, उसके प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है. आज जैसे धीरे धीरे हम लोग हाइब्रिड लाइब्रेरी में जा रहा है, ई लाइब्रेरी में जा रहे हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, इनटेक तो करना पड़ेगा. सो इनटेक के लिए आपको एक एम्बियंस, लाइब्रेरी सेकेंडली आप लोग देखोगे लाइब्रेरी इज ए एम्बियंस. दूसरा व्यक्ति पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ूं? जो बच्चा बिल्कुल ही पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको 10 दिन लाइब्रेरी में भेजो, वो धीरे धीरे किताब उठा के पढ़ना शुरू करते हैं. कभी होता है ना बचपन में कि पढ़ने की दिल नहीं करता, खेलूंगा सर. सो हाउ टू मोटिवेट. आप लोग देखोगे आज के दिन में जो पढ़ने की एक हैबिट से वो थोड़ा कम होने लगे. कम होने इन दैट सेंस कि इंफॉर्मेशन ना डिजिटली बड़े इजीली अवेलेबल हो रहा है, बट उस इंफॉर्मेशन की जो ऑथोरिटी नहीं है, माने इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन. क्यों मैं बोल रहा हूं, इसके साथ क्या रिलेट कर रहा हूं, वो नहीं है. बट पीपल आर एंजॉयिंग विद दैट. दैट्स व्हाई जो रीडिंग हैबिट्स है, चाहे वो कंप्यूटर में, लैपटॉप में हो, कहीं मोबाइल में हो, जो रीड करना one by one. Why people of India so enlightened in ancient period? Because teacher used to sit in front of the student used to sit in front of the teacher started speaking, they learn, they remember it for a long period of time. Now you just remember your one note which you have
create whichever written for your examination. What you just copied out, remember it. Then you can correlate with the other note also. The next note, the second note, you can remember with eye view. You need not to read even. So that's the base part of how you are going to enhance our memories. And memories is ultimate thing. That's why. Right? So coming to the next concept, what are the collection? These are the important. General book, textbook, digital material, magazine, newspaper, journal, encyclopedia, academic library collection में ये है. Now, कोई मुझे बताएं कि जर्नल और मैगजीन में क्या डिफरेंस है? सर जर्नल में बेसिकली जो लिटरेरी वर्क है तो दैट इज पब्लिश्ड इन द जर्नल and magazine could be it is a kind of brochure or like Forbes magazines आते हैं, different magazines आते हैं, योजना आते हैं. These are the magazines for a particular domain. Or journal is something where literary work has which is published. Correct. Very correct. Anybody else? Payal, Kunal, anybody? Yash? Anybody, you have an idea? What is the difference between the journal and magazine? What is Payal? Sir, basically, magazines are written for the audience. Sir, both of them have a different audience, sir. और सर ऑथरशिप भी सर डिफरेंट होती है सर. जो मैगजीन्स होती है आर्टिकल्स और वो जर्नलिस्ट लिखते हैं मैगजीन वगैरह और प्रोफेशनल राइटर्स लिखते हैं जर्नल वगैरह. मने और कोई बताएंगे, कोई आइडिया देंगे? सर जर्नल और मतलब preferred by the some specific research scholars, but magazines are referred by the everyone. Yes. So the magazine covers all subject. Remember, magazine जैसे इंडिया टुडे को आप ले लो. इंडिया टुडे क्या करती है, जो भी इमीडिएट स्टोरी होता है समाज में जो चल रहा है उनको पिक करते हैं. सपोज आप रॉकेट भेज रहे हो, सैटेल भेज रहे हो, सो या मंगलायन कर रहे हो, तो ही दैट इंडिया टुडे उनके ऊपर लेख पब्लिश करते हैं. कभी कभी क्रिकेट मैच के ऊपर करते हैं, कभी एकेडमिक्स के ऊपर करते हैं. तो उनके सब्जेक्ट एरिया बॉर्डर है, सारे सब्जेक्ट कवर करती है. बट जर्नल हमेशा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होती है, जैसे जर्नल ऑफ फिजिक्स, जर्नल ऑफ बायोलॉजी, जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स. छोड़ दो ना से पिया उसने मैंने डाला तो पिया तेरे मम्मी जी नीचे उतर के बैठी थी. पिया मैडम आप ऑनलाइन में हैं और क्लास चल रहे हैं आपकी. म्यूट कर लीजिए प्लीज. जब क्वेश्चन पूछ रहा हूं तब कहाँ थे, कहाँ आवाज नहीं आ रही है किसी की भी. So that's the difference between journal is on specific subject. Magazine covers all subject. That's the base difference between the journal and magazine. आप journal के ऊपर research article published होते हैं, जैसे आप लोग कह रहे हो, बहुत अच्छे कह रहे हो. Now encyclopedia और journal में क्या difference है, कौन बताएंगे मुझे? जर्नल कौन से सोर्स है? पीरियोडिसिटी का डिफरेंस. ये periodically और पीरियोडिसिटी जर्नल आर पब्लिश टाइम टू टाइम. periodicity एक हो गया. चलो और कुछ आइडिया? So encyclopedia is very bulky in nature, जो that is elaborately given. Like if I talk about the physics, so it is like a reference. You can take the encyclopedia, which you will get elaborate. Correct. और anybody? जर्नल और encyclopedia में बेसिक डिफरेंस क्या है? प्राइमरी सोर्स में किसको रखोगे, encyclopedia, जर्नल? सर जर्नल. क्यों? Because that is the hand. क्योंकि सर वो पहली रिसर्च हो रही है ना सर.
Yes, yes, yes. सर जो एनसाइक्लोपीडिया वो हमारा टर्शरी सोर्स है, बिकॉज सर हाँ। जो एनसाइक्लोपीडिया है कंसाइज समरी देता है सर किसी भी टॉपिक के बारे में, और जर्नल Correct. होगा वो किसी भी रिसर्चर के थ्रू स्टडी की जाती है, कोई एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसके थ्रू जो रिसर्च वो पब्लिश करता है वो जर्नल में आती है। Very good. So journal always contain new information, recent information, और encyclopedia old information, है ना, tertiary जो old information carry करते हैं। अब मुझे ये बताओ कोई जना, what is documentation? Documentation service. What is documentation service? कोई भी व्यक्ति So, बताओ। sir, library में जो भी work होता है sir, basically from the acquisition to everything. So there should be documentation. Why the documentation is required? Because there could be audit. So you have to answerable to the authority that whether you have followed the standards which has been maintained by library or an organization or an authority. So we have to make everything in a documentary. So that is the documentation. Right. Now this is documentation. Sir, in my words, basically, sir, can I say? Please. Yes, sir. Sir, when I was working in DRC College Library, the librarian sir told us the documentation service is making information available to all the readers. Simply, Right. sir. It basically deals with managing information. और एक बार बताओ थोड़ा। Sir, it basically deals with archiving and managing and storing the information. Right. Now, you are talking about two component, right? All. कि एक जना बता रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन माने हम डॉक्यूमेंटेड करके रखेंगे, जो भी काम कर रहे हैं वो लिखित में रखेंगे, है ना, वो क्योंकि हायर अथॉरिटी को दिखाना है। दिस इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर जॉब, बट our area of that is documentation services, and documentation services, remember I am talking about the documentation services. डॉक्यूमेंटेशन सर्विस की बेसिक आइडियोलॉजी, ये जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, ये लाइफ लॉन्ग याद रखना बेटे। नोशन थॉट फ्रॉम माइक्रो डॉक्यूमेंट टू द स्पेशलिस्ट, नोशन थॉट माइक्रो डॉक्यूमेंट टू द स्पेशलिस्ट, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, है ना। नोशन थॉट माने न्यू आइडियाज, न्यू इंफॉर्मेशन, फ्रॉम माइक्रो डॉक्यूमेंट माने जर्नल टू द स्पेशलिस्ट, जो लोग रिसर्च में काम कर रहे हैं, ये है डॉक्यूमेंटेशन। तो आप अगर मान के चलो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लाइब्रेरियन की पोस्ट में ज्वाइन किए, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियनशिप। आपका वहां काम ये होगा कि हर एक व्यक्ति की प्रोफाइल बनाना, ये कौन से सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहे हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और उनके ऊपर जो न्यू हर रोज आर्टिकल आते हैं उनको अलग करना, उनकी एब्स्ट्रैक्ट बनाना और उनको भेजना। उनमें से वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद बोलेंगे ये वाला आर्टिकल भेजो मुझे, फिर उस आर्टिकल को भेजना है। तो ये एक सर्विसेज है, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, राइट। नाउ चलो, जब बात हो ही रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज के ऊपर, तो मुझे कोई साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के नाम बताओ दिल्ली में, तो इंडिया में। Sir, can I ask something? Yes, please. Sir, as you told us के जो लाइब्रेरियन भाभा एटॉमिक सेंटर में जो लाइब्रेरियन की पोस्ट पे आप ज्वाइन करते हैं, फिर आपको सबकी प्रोफाइल बनानी है एंड वो जो आर्टिकल कहेंगे अपनी रिसर्च फील्ड से रिलेटेड, तो सर उसके लिए सर ये एसडीआई नहीं कहा जाएगा इसको, सिलेक्टेड डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज? राइट। ये सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होता है, न्यू इंफॉर्मेशन नहीं होता है। सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सारे इंफॉर्मेशन कलेक्शन होता है, राइट। बट डॉक्यूमेंटेशन में हमेशा न्यू इंफॉर्मेशन होगा। इन दोनों में यही थोड़ा डिफरेंस है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। वी हैव आस्क्ड अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, हाउ एसडीआई इज डिफरेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। एसडीआई इज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज, बट एसडीआई कवर ऑल मीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ऑल रिसोर्सेज, बट this one documentation service basically specifically for the micro document माने journal वगैरह, notion thought, new word, new concept, right? ऐसे इसको। Okay, sir.
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. You have done a great job. So these are the, now coming to the digital library. मैं digital library के ऊपर ज्यादा अभी बात नहीं करूंगा. ये once we enter into the digital library, it's become all digital library, but you need to understand the basic component, right? So textbook and general books. General books means how you differentiate textbook and general books. Tell me, anybody. आप कैसे दोनों में भीतर अंतर करोगे? Syllabus according to the syllabus. हाँ. Textbook or according. ठीक. So Textbook journal is books means which covers, which may not relate written in your syllabus, but it's cover almost all the component of your syllabus, right? Textbooks, you have to have read this one. This is a component of your syllabus, right? That's the basic difference. ये है collection of academic libraries. अब चले आते हैं different functions, objective, क्यों library इस बना जाता है? एक एक करके मुझे बताओ. आपके हिसाब से why academic library is created? These are the important, but आप लोग बताइए अपने मन से. सर फॉर द स्पेसिफिक यूजर, सर एकेडमिक लाइब्रेरी में एक स्पेसिफिक यूजर ही आएगा, चाहे तो वो स्टूडेंट हो सकता है, वहाँ की फैकल्टी हो सकती है, या कोई जो मतलब सर जहाँ की वो है उस पर डिपेंड करता है. और जो सर Very good. पब्लिक लाइब्रेरी वहाँ कोई भी आ सकता है सर. Excellent, Anyone. excellent. Very correct. Sir, Any to other? develop the habit of reading. Reading habit. Improve the reading habits. Correct. एक ambience बनाना है ना. और कुछ? Selective information resources भी तो collection development में लाओगे ना, है ना? Resource भी तो restricted होगा. Suppose आपकी कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उनकी प्रायोरिटी पहले दोगे, है ना? तो उनके आधार पर, उस सब्जेक्ट के आधार पर आप बुक कलेक्शन को डेवलप करोगे. उसके बाद रेफरेंस में आप अलग अलग दूसरे सब्जेक्ट जो पढ़ाया नहीं जाता है, सपोज पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में या गोवा यूनिवर्सिटी में ओशनोलॉजी है, तो ओशन साइंस के ऊपर, ओशनोलॉजी के ऊपर बुक्स कलेक्शन होगा. बट जयपुर में, अजमेर में, वो शायद उस यूनिवर्सिटी में ओशनोलॉजी नहीं पढ़ाया जाएगा, वहां पे डिफरेंट होगा. डेजर्ट इंजीनियरिंग के ऊपर बुक्स होंगे ज्यादातर. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी लाइब्रेरी की नेचर है, कैसे डेवलपमेंट करेंगे. ये सारे आइडियाज में जनरेट इस वजह से कर रहा हूँ, या बोल रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपकी थिंकिंग फैकल्टी इतनी कॉन्क्रीट हो जाए लाइब्रेरियनशिप में. जिस लाइब्रेरी में जब भी आप पैर रखो, तो आपकी ब्रेन में इमीडिएट आना चाहिए कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, मेरा लक्ष्य क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा. ठीक, तनख्वाह तो मिल ही जाएगी. सो बेटर लाइब्रेरियनशिप के लिए, बेटर इंडिया के लिए, बेटर सर्विस के लिए आपको आज से, मतलब आप लोगों ने हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी सिस्टम में ज्वाइन किए, एसओएल में किए, और आप लोगों को इनिशिएट करना है हम शुरू कहाँ से करें और किस तरीके से करें और बेहतरीन करें. पर्पस ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी वही है, ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव और पर्पस में थोड़ा सा माइनर से चेंज होता है. ऑब्जेक्टिव में एक गोल्स होता है, पर्पस में एक्ट होता है, राइट? पर्पस फॉर द क्यों, किसको, राइट? स्टूडेंट, रिसर्च, information to the users. हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. फैकल्टी मेंबर्स, अच्छा, कई बार दूसरे यूनिवर्सिटी से भी लोग आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, उनको भी आपको हेल्प करना है, तो रेफरेंस लेके कि हमें ये चाहिए, तो वो भी आपका एक काम हो जाता है. तो एक नेटवर्किंग में जो लोग आते हैं, जो स्टेक होल्डर आ जाते हैं, उनको वो करना है. और मेनली नॉलेज एनहांसमेंट करना लाइब्रेरी का काम ये है, लाइब्रेरी का काम, क्योंकि जितने नॉलेज आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर नॉलेज ग्रो होता रहेगा, यूनिवर्सिटी की वाइब्रेशन उतना बढ़ता जाएगा, यूनिवर्सिटी बेटर यूनिवर्सिटी बनता जाएगा. तो ये दैट्स व्हाई दिस द पर्पस ऑफ द एकेडमिक लाइब्रेरी. फंक्शंस क्या की होगी स्कूल लाइब्रेरी में? कुछ नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, कोई मुझे बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा. Why girls are so silent?
So sir, जो किसी ने last time बताया था कि reading habit, so it is the primary responsibility of the school to inculcate this habit to their students. Very true. So Very reading true. habit is from the school only. So that is the foundation level. And Yes. college level बच्चे समझदार हो जाते हैं, and then we have to push them, and we have to give the resources which they need. We have to interact more, and we have to disseminate that. I mean, Correct. we have to take the action. We have to take the. That is the thing. Then college library में और university library में कैसे करोगे? University is totally to particular scholars, क्योंकि ये है university विश्वविद्यालय. So that is that has to deal with the scholars. So उसमें researchers, scholars and faculties जो भी है. So in college up to graduation या master degree level. Very good. University में ज़्यादातर. आप सब लोग सहमत हैं? बाकी लोग? Yes sir. कितने सहमत हैं? 10%, 20%, 30% या 100%? चलिए, next the function of the college library. Then you have a different sorry, that was the last one. Now, different. Now we'll take another important aspect, different function of the college libraries, the major function of the different academic libraries. So we'll stop here in the functions of the college, university, school, college, university library. So this is something which may be helpful for you. Right. So we have a 43 out of 43. There are many muted themselves. They are not interacted. Why? I do not know. You need to be more interactive. आपको और इंटरेक्टिव होना चाहिए, है ना? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रहे हैं? इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी, तो उनके लिए तैयारी शुरू कर दी है। 4 तारीख से तो जनरल टाइम लाइब्रेरी साइंस की डेट्स आपको दिया जाएगा, और सपोज डिसर्टेशंस आप लोग ऑलरेडी लास्ट पोर्शन में है, खत्म कर रहे होंगे। Sorry to interrupt you, sir. I have something to ask pertaining to dissertation. So That's why I'm here. Yes, sir. So basically, ये हमें hard copy देना है, जैसे कि हमें एक link that is the email ID we have sent our dissertation on soft copy. So like we have to give the hard copy also binding. Yes, hard binding. yes. At the time of Viva. Okay. So to whom we submit the hard copy to that time the examiner to the examiner who will take your Viva. All right. Only one copy, right? Because only one copy. 4 copy. One copy give to them, and one copy keep it with you, along with you, because that's a very important document for you. Yes. Right? Yes. तो 2 कॉपी बना लेना बेटे। Yes. Sir, can you please repeat? अभी मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा अभिषेक, हम देखो, एक डिजिटल कॉपी आपने भेज दी है, 2 कॉपी बेटे प्रिंट कराना है। 1 कॉपी जो भाईवा ले रहे हैं टीचर उनको दे देना, और 1 कॉपी अपने पास रखना। जब भी आप MLISc के बाद इंटरव्यू देने जाओगे तो वो आपकी एक इंपॉर्टेंट टूल हो जाते हैं, तो वो आप मतलब इंटरव्यू बोर्ड में दिखाओगे कि मैंने इसके ऊपर स्टडी किया। सर ब्लैक एंड व्हाइट और कलर सर? ब्लैक एंड व्हाइट क्यों ज्यादा पैसे खर्च करोगे? जहां ग्राफ वगैरह बनाए हो उनको कलर ले सकते हो, बट एकेडमिक रहो। मतलब हमें ना थॉट इंपॉर्टेंट है, डेकोरेशन नहीं। यस सर। डेकोरेशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। सिंपल रहो, बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो, नम्रता के साथ। देखो जीवन ही अलग हो जाते हैं, है ना बेटे? यस सर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताऊं, व्हाट इज द इनोवेटिव सर्विस। आज के दिन में लाइब्रेरीज में क्या इनोवेशन चल रहा है, क्या इनोवेटिव सर्विसेज चल रहा है? सब लोग है ना, सुन रहे हो? यस सर। राइट। यस सर। कितने जनों को भूख लगी है और अभी तक कुछ खाना चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों को? नो सर। खुशबू, यू आर फीलिंग हंग्री? कुछ ले लो। नो सर। नो सर। ओके ओके। नो सर। सो आई विल फिनिश इट अप वेरी क्विकली। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। आप लोग बहुत सारे वो किए हैं,
बहुत सारी क्वेरीज तो है, वो हम धीरे, मेरा आज क्लास है, फिर कब क्लास है, अच्छा मैं टाइम टेबल देख लूंगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बेटे, लाइब्रेरियनशिप का ना जो डेवलपमेंट फेज है, उसको अगर हम थोड़ा सा मैप करें, तो आज के दिन में लाइब्रेरीज में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, वो थोड़ा बताने की मैं कोशिश करूंगा। आप लोग इनको जरा देखें। एक तो है, हमें जाना कहाँ है, मतलब what are the things we need to be taken in our mind when you are proceeding to the library profession, right? So have a look. But मैं लो तो शेयरिंग में है, रुको, मैं कहाँ था, में था, यहाँ पे था, इनोवेटिव लाइब्रेरी एप्लीकेशन। आज के दिन में इनोवेटिव, देखो ये एकेडमिक लाइब्रेरी में हम इस तरीके से आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस कर सकते हैं, राइट, बड़े इंटरेस्टिंग है। लास्ट मतलब कई लाइब्रेरी में आप लोग जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो और विजिट कर रहे हो, तो वहां देखोगे बारकोड एप्लीकेशन है, कहीं पे मैंने कहीं पे हमारा सिस्टम में वो नहीं है शायद, टार्टल टेक नहीं है, जिसको ईएम टैग हम कहते हैं। बट यस, आरएफआईडी लाइब्रेरी बहुत सारे हैं, जैसे राजगुरु कॉलेज तो है ही है, उसके बाद विवेकानंद कॉलेज, CRL सर, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी ना, Yes, वो sir. कॉमर्स लाइब्रेरी, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाइब्रेरी है, हंसराज कॉलेज है। क्योंकि ये इनमें से जितने लाइब्रेरीज आप देख रहे हो, सुन रहे हो, वो हर एक जगह पे मेरा मतलब आई एम ए पार्ट ऑफ दैट, राइट। सो क्योंकि इस वजह से मेरे टिप्स में याद है सब कुछ, कहाँ कहाँ कौन सी लाइब्रेरी में हमने किया था, तो आई कैन रिमेम्बर ऑल दोस वर्क फ्लो क्या होगा। सो देन हंसराज कॉलेज, वो कॉलेज, विवेकानंद महिला कॉलेज, यस, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, ये सारे आरएफआईडी लाइब्रेरी है। जब आप लोगों की तरह मैं MLISc कर रहा था, तो मैं सोचता था कि ये जो बुक इशू रिटर्न वाला बड़े मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे एवोल्यूट किया जाए। तो उस समय से सोचता था, नौकरी मिला, नौकरी करता रहा, क्योंकि नौकरी भी एक जरूरत है, जीवन चलानी है। लेकिन 2014 में जाके, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ा पुराना हूँ, 1996 से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, 2014 में जाके हमने एक RFID लाइब्रेरी सिस्टम किया, तो ऑटोमेटिक बुक इशू रिटर्न शुरू हुआ। फिर आज के दिन में उनको करने के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ ये थोड़ा कॉस्ट ज्यादा जा रहा है, उनको हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट। फिर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया नियर फील्ड कम्युनिकेशंस के ऊपर। हाउ नियर फील्ड कम्युनिकेशन माने आपकी मोबाइल फोन में, जैसे मेरा मोबाइल फोन है, इसमें एक NFC चिप लगी होती है। जैसे NFC की मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताऊं, आप लोग जैसे वहां पे जाते हो बेटे, ये जो मेट्रो रेल है, मेट्रो रेल में जो आप लोगों के पास जो स्मार्ट कार्ड होती है, मेरे पास भी है, वो स्मार्ट कार्ड ना NFC, दैट्स व्हाई आप लोग हम लोग क्या करते हैं, देखना, जब भी हम उसके थ्रू पास होते हैं तो टैप करते हैं, वहां पे चिपकाते हैं, तभी गेट खुलती है। तो इनका नाम मतलब लोअर एनर्जी है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी चाहिए, इस वजह से उनको ना टैप टेक्नोलॉजी कहते हैं। RFID की तरह ही है, लेकिन लो लेवल का है। सो दैट्स व्हाई NFC। फिर आज के दिन में रोबोटिक एप्लीकेशंस हो रहा है लाइब्रेरीज में, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, जैसे आपकी मोबाइल फोन में ब्लूटूथ है, आप स्कैन करो, सारे लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो छोटा छोटा कंपोनेंट है जो आप लोगों को बहुत शायद आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो एक बार देख लेते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, BLE, रोबोटिक, मैं जब स्नैपशॉट कर रहा हूँ, इन डेप्थ नहीं जाऊंगा अभी। मोबाइल लाइब्रेरी बेस्ड में आप आज के दिन में एक हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी की देख लो, बहुत अच्छी बनाई है कि लाइब्रेरी आप लोग, और ये तो मतलब पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल्स हो गया कि हम डिस्टेंस एजुकेशन में सारे स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी एक्सेसिबिलिटी है, और आप लोगों के पास तो है ही है। और ये हमारा वाइस चांसलर सर और हमारा डायरेक्टर मैडम की विजन था, और हमें वो मेटेरियलाइज करना पड़ा। और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से बहुत ब्रिलियंट आइडिया
हम अप्लाई कर पाते हैं बच्चों में। सो मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी में वो भी एक पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है, जिसमें 88,000 बुक्स आप लोगों के पास एक्सेसिबल हो जाएगा और आप लोग पढ़ते हो। So these are the important aspects: mobile library site, mobile app, circulation, reference service, CAS, SDI, distribution of the e-resources, SMS alert service. SMS alert service आप लोगों के पास भी है। Library map, library floor, library news, mobile database, list of new arrival, interlibrary loan service, book and article search, library hours and library tour. These are the important service on the mobile library service, right? Now, these are the RSS feed, library instructions. This can be combined in one application and can be flow among the library user, and we can have more value addition on that. So this is mobile library website, and it will be worked as a app. Now coming to the Bluetooth technology, how we are going to think that suppose you are going to the closer to the library, and suppose this is the books, this one is the books, and it has a Bluetooth, and it's connect. If it's going to search this one, it will connect and make you aware this book is available over here, and this is called iBeacon. iBeacon बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आप लोगों को बताऊं। ये iBeacon इन फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं। जैसे इस आई बीकन को मैप करके एक मैंने बुक रैक के अंदर चिपका दिया और उस रैक में जितने बुक्स है इनको इनके अंदर डाला, उनकी फ्रिक्वेंसी एनहेंस किया। और आपकी जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हो या एनएफसी टेक्नोलॉजी हो, ब्लूटूथ या एनएफसी, उनके थ्रू आप जब जाओगे तो आप अपनी मोबाइल में सारे बुक्स की रिकॉर्ड देख पाओगे। ये सबसे बड़ी आईबीकॉन की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। एग्जैक्टली लोकेशंस करके आपको बुक तक पहुंचाएगा। तो इस तरीके से सर्विसेज आने वाले टाइम में आप लोगों को लाना है। शायद मैं देखूं कि आप लोग कर रहे हो और बहुत अच्छे करोगे। आपको विजन लेना है, सपना देखना है। सपने देखना वही देख पाते हैं जिनके अंदर उनको सच करने की ईश्वर ने क्षमता दे रखी है। तो सपना देखना मत छोड़िएगा, आज नहीं तो कल। मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, 1996 से मैं कोशिश करते करते एक RFID लाइब्रेरी 2014 में किया, और उसके बाद सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइब्रेरी जहां जहां होता रहा वहां पे मैं गाइड करता रहा, मैं पार्ट बन गया उनका, क्योंकि अच्छा लगता है। तो ये सारे आप लोगों का आने वाले टाइम में करना है। ये है आईबेकॉन। आईबेकॉन ऐसे होते हैं, ये नॉर्मली कॉमर्शियल पीपल बहुत यूज किया है। हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट इन द लाइब्रेरी, एक बुक के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं ये आईबेकॉन। सपोज एक बुक रैक है, बुक रैक के पास हम अगर एक एक मूर्ति के अंदर आईबेकॉन रखते हैं, उस पर्टिकुलर रैक में जो किताब है उनकी भी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल में आ जाती है। उसके बाद लाइब्रेरी में कोई मतलब कौन सी फंक्शन से कोई इंटरेक्शन है, समथिंग लाइक दैट, you can get it from that particular mobile application. उसके बाद आज के दिन में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हो रहा है, रोबोटिक डिजिटाइजेशन। माने हम तो डिजिटाइजेशन बोल रहे हैं, लेकिन हमें रोबोटिक यूज करना है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी ह्यूज नंबर ऑफ मोबाइल मतलब डिजिटाइजेशन पॉसिबल है। तो आज के दिन में ये सारे मशीन रेडिली अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम डिजिटाइजेशन में बहुत सारे कंपोनेंट है जो आपको हेल्प करेंगे कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हम डिजिटाइज कर पाएंगे या नहीं, राइट? ये मैटर है, बट आप लोगों को देखना है क्या हम करेंगे। दूसरा, रोबोटिक स्टैक मैनेजमेंट, UMKC लाइब्रेरी। ये देख लो।
Sir, it is looking like an industrial library. Huh? How Sir, it it is looking like an industrial library. ना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ये और ये भी एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है जिसमें अब इंडिया में भी एक लाइब्रेरी है जो इस सारे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है और इस तरीके से बोलो So this application are there, and this is another library which has probably the same, right? It is almost like there's the robotic technology application in the library for stack management, right? Now, this is also in India. There is a one library here, PS University Library. They are using this particular robot for now look at this is the Indian. So this is also applicable in Indian audience. This robot goes and put the books together. So this is the best part. This is the old one. Now, this is stack management. Now, for inventory control, like your the stack management and the stack management and the stock verification, this Robis is very popular. Have a look. Yeah. Good evening. Right. So this is very, very popular one. Another TEMI. TEMI is required basically for a kind of reference service. It's a guide to the library. Have a look. दो मैडम तुम बताओ क्या कराया तेरी मैडम ने नहीं नहीं So it will connect the librarian also for the different queries. So this is the application. Another application, this one, have a look. This is an advanced robot for accessing the books.
So this is the way things is moving. So you can understand these are the component where we can use for the academic library system, and hopefully there will be a time when this technology will be one of the finest technology for application. But I will tell you, the most important is we have to be more empathic to the user, to the library, to the institute, and we need to be more proactive. Then automatically the new technology, new things will come up in the mind. So this is all about the things, right? So if you have any question, your queries, we can discuss on that. From my part, it is done. Okay. आपके पास कोई 11th queries है? onward, सर 11th onward से start होंगे internals? होना चाहिए, वो अभी आ जाएंगे, मतलब प्रेडिक्शन नहीं करना है. And examination form बच्चे पूछ रहे हैं जो वो जब भी आपके वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म, तुरंत आप लोगों के पास मैसेज आ जाएगा. Because regular की date आ चुकी है, the exam will be start from 24th on theory exams. उससे पहले आ जाएंगे, कल परसों में एग्जाम वो फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिलअप कर लेंगे आप लोग, ठीक है. 16 से है ना, 16 से एग्जाम. 16 के उनके प्रैक्टिकल है, बट हमारी सर से बात हुई थी, तो मेरे सर ने बताया कि 5th and 6th को देयर इज प्रैक्टिकल ऑफ LIS and 7th and 8th of June is a viva of dissertation. Okay. ठीक है. So Sir, like I have one question. So what do you think about the Indians' perspective? I mean, the robotic things and everything. What you have shown now, like as we have a target of Viksit Bharat of 2047, right? 2047. So like, will we achieve all these things, or like it will take more time because these things like out of the paradigm, right? I think I mean we in India we really need a manpower, and also we are facing well, I mean unemployment in India. So do you think these things can really replace the human human manpower, and really can also give the human touch in the library? Because robot is that is good, but I think robot there should be blended. Like robot is also should be there, but at the same time, if the manpower is very less, so it will be more robotic. I mean, nobody to share anything, nobody to discuss. It will be all AI generated things that you'll be getting very a straightforward answer. Very correct. Actually, for them it is they have to. There is no option. But for us, we have an option. We have a manpower. But importantly, I will tell you, when you're thinking such kind of ideas, it's a kind of making your imagination more viable, right? If there is a requirement of that particular area where we can put the AI or robotics or the stack management, robotic stack management, well, there we can apply. But probably India is not, India don't require it because we have a best manpower. They can do better for our country. But we need proactive manpower, right? So that's very important, right? So, Ritu, what is your question? Yeah, sir, actually. Yeah, sir, I didn't get the book till now, sir, but somebody told me that they will by post they will send me. Is this right, sir? And nobody picking the number also, that I am trying again and again. You come any day after Wednesday, means after what is the date? 6th is our annual day. That is 8th. Monday. Come after 8th any day, you will receive a book. और आपको और एक चीज बताऊं, आपको अगर कोई दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा कि मुझे इस एड्रेस पे भिजवाना है, हम भिजवा देंगे. और बताओ. ओके सर, थैंक यू. ठीक है,
मेरे पास प्रॉब्लम तो आए, सोल्यूशन के लिए तो हम बैठे हैं। Yes, sir. क्या कुणाल? अरे मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ये सर आप ठीक ठीक बोल रहे हो। और प्लस आपसे संडे भी मुलाकात होगी और मंडे भी मुलाकात होगी। संडे भी होगी, मंडे भी होगी। करेक्ट करेक्ट। मंडे फाउंडेशन डे पे मिलेंगे हम। मंडे फाउंडेशन, सब लोग आ रहे हो आप लोग। विल एंजॉय टुगेदर, विल टेक हाई टी ओवर देयर, और इट इज आवर प्रिविलेज दैट VC सर ने ये इनिशिएट किया, और मैडम, हमारा डायरेक्टर मैडम। दिस, ये मैं बताऊं, दिस इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एंजॉय इट। सो मेरा नेक्स्ट क्लास जब है, मैं टाइम देखता हूँ, आप लोग इसी तरीके से ज्वाइन करोगे, और यही खत्म करता हूँ। सर आपका नेक्स्ट और क्लास 8 को है, 8 को है। बहुत अच्छा है, तो मुझे थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, और आप लोगों के साथ दोबारा आप लोग क्वेश्चन लेके आइएगा, डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे? सो आई एम टेकिंग ब्रेक, मतलब आई एम जस्ट एंडिंग अप माय सेशन। Thank you so much being Yes, with sir. me. Thank you, you. sir. God Thank bless you you, so much everybody. for And giving. study hard, Thank you. study hard, study hard. You have, Yes, sir. I need gold medal in MLIS and BLIS in both. Okay. All the best, my son. Okay, thank you, Yes, sir. sir. Okay, bete. Thank Thank you, sir. sir.